Welcome my dear students. Today we are going to start off with the chapter which we were discussing already, general auditing principles and auditors responsibilities. The topics which we are going to discuss is what is fraud, the characteristics of fraud and the fraud risk factors. Let's begin the chapter straightforward. What is the meaning of fraud in audit and its characteristics? तो हम पहले समझेंगे fraud क्या है और इसका characteristics क्या है. In auditing, fraud refers to intentional deception or misrepresentation of financial information by one or more individuals within an organization, which can result in misleading financial statements. Simple language में क्या है, audit में fraud intention, किसी का deceive करने का intention अगर है, financial statements जो है उसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट करेंगे, आइदर बढ़ा के देंगे तो कि हमारा प्रॉफिट शो करेगा ज़्यादा, या हम उसको कमाएंगे तो कि हमारा लॉस दिखाएगा. इन दिस वे व्हाट इंडिविजुअल्स डू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं, दे विल मिसलीड द पीपल, द स्टेक होल्डर्स बाय गिविंग मिस इन्फॉर्मेशन इन द मिसरिप्रेजेंट बाय फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग बाय फ्रॉड इन ऑडिट. ठीक है. What are the characteristics of fraud? Characteristics of fraud in audit include deceitful manipulation of records. जो records हमारे हैं accounts के statements हम maintain करें, उनको manipulate करना, either बढ़ा देना या कमा देना, whatever it is. ठीक है. Deliberate concealment of transactions, मतलब जानबूझ के कोई भी transactions को हम conceal करें. We are hiding them. Collusion among employees. Employees दो चार जन मिलके they are doing some unethical works in order to change the transactions, change the financial information, and the overriding of internal controls to perpetuate the fraud. Okay, और जो internal control है उसको हम ऐसे करके जो employees within the ऑर्गेनाइजेशंस है क्या करेंगे, वो मिली भगत के काम करेंगे तो कि वो जो फ्रॉड है उसको पकड़ा ना जाए और इंटरनल कंट्रोल्स में वो मैंने फ्रॉड पास हो जाए विदाउट बीइंग caught. ठीक है. So these are the characters of fraud we can say. Fraud can involve various forms such as financial statement fraud, misappropriation of assets and fraudulent financial reporting. तो हम जो रिपोर्टिंग करें उसको fraudulent हो सकता है, misappropriation of assets को misappropriate करेंगे, and the financial statement fraud. Financial statement में जो information हम दे रहे हैं portray करें वो गलत होगा. ठीक है. So the key characters often include deception. Obviously there is an idea of deceiving other, intent to deceive for personal gain. एम्प्लॉयज़ का अपना पर्सनल गेन के लिए वो डिसीव करेंगे, इंटेंशन इज़ बैड. और टू मिसलीड स्टेक होल्डर्स, राइट. स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, अगर अपना प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाएंगे तो स्टेक होल्डर्स दैट इज इन्वेस्टर्स मे थिंक ओके दिस इज अ वेरी गुड कंपनी वी कैन इन्वेस्ट इन. अगेन वायोलेशन ऑफ लॉज, दे कैन वायोलेट सम लॉज इन ऑर्डर टू हैव दे उन बेनिफिट्स, रेगुलेशंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स. कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, उसको ब्रेक करके हम अपने काम करते हैं. तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड इन द फ्रॉड. जो ऑडिट में काम करते हैं, ऑडिट करते तब पता चलता है व्हेन वी आर डूइंग द ऑडिट वर्क वी कैन अंडरस्टैंड वेयर द फ्रॉड हैज़ क्रेप्ट इनटू द financial statements, right? So audit is very much important for finding out this frauds, right? What are the ways in which fraud can be done in financial statements? Financial statements कौन से ways में हम fraud कर सकते हैं? Fraud in financial statements can occur through various means. Let us do one by one. Fictitious revenue, recording sales that never occurred to inflate revenue figures. ठीक है. सेल्स हुआ ही नहीं है, हम उसको बढ़ा के दिखा दे रहे हैं कि fictitious sale, for example 1 लाख रुपीज़ का सेल दिखा दे, but that never occurred only in order to inflate the revenue figures. सेल अगर बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी हमारा ज़्यादा आएगा, राइट. ओवरस्टेटिंग ऑफ एसेट्स, इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स सच एज इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी टू ओवरस्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो एट द बैलेंस शीट डेट व्हाट वी सी द पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर हम एसेट्स का वैल्यू बढ़ा देंगे तो दैट विल हैपन व्हाट, द पोजीशन ऑफ द कंपनी विल बी बेटर. ठीक है. अंडरस्टेटिंग लाइबिलिटीज़, बहुत सारे लाइबिलिटीज़ रहेंगे जिसको हम कंसील कर देंगे तो कि दिखाएंगे नहीं, जो कोई लोन्स हमने लिए उसको हमें पेमेंट नहीं किया, लेकिन हम दिखाएंगे हाँ देयर आर सो लोन्स हैव बीन पेड. लेट्स सी व्हाट दे सेइंग. कंसीलिंग और अंडरस्टेटिंग लाइबिलिटीज़ सच एज लोन्स और अकाउंट्स पेबल टू प्रेजेंट अ हेल्दियर फाइनेंशियल पोजीशन. तो कि स्टेक होल्डर सोचे हाँ हमारी कंपनी अच्छा पोजीशन में है, हम लाइबिलिटीज़ को कमा देंगे एंड देयर इज नो मोर लाइबिलिटी इन दैट कंपनी, सो द कंपनी विल बी इन अ वेरी नाइस वे टू रन फॉर लॉन्ग रन एंड सो वी विल इन्वेस्ट इन दैट company. Okay. Manipulating expenses
falsely increasing expenses or understating expenses to manipulate profitability. कभी हमें अगर हमारे सेल्स को कम दिखाना है हम क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़ा देंगे. कभी हमें अगर सेल्स को दिखाना है कि हमारा ज़्यादा ही हम दिखाना चाहते हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, सो आवर प्रॉफिट विल बी डिड्यूस इन दैट वे, right? Misrepresentation of financial instruments, representing the value of existing financial instruments such as derivatives or securities. जो derivatives and securities उसको भी हम misrepresent कर सकते, दिखाएंगे बढ़ा के या चढ़ा के, ठीक है. So in this way what happens, we can conceal from the stakeholders the actual position of the company, right, by portraying wrong information in the financial statements, right? Of balance sheet transactions, concealing liabilities or transactions of the balance sheet or mislead stakeholders about the company's financial health, right? हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के बाहर में जो लाइबिलिटीज़ हमारे हैं उसको हम दिखा रहे हैं ऑलरेडी पेमेंट हो गया है, ये लाइबिलिटीज दिखाएंगे ही नहीं, बहुत से ट्रांजैक्शंस को हम ऑफ कर देंगे टू इन ऑर्डर टू शो द कंपनी इज़ अ वेरी हेल्दी कंपनी, फाइनेंशियली इट्स हेल्दी, बट एक्चुअली कंपनी इज़ नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन, ठीक है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एंगेजिंग इन ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज एट इन्फ्लेटेड prices or under unfavorable terms to benefit insiders at the expense of the company, right? Related party transactions हो सकते हैं. related party transactions हम कहीं से क्रेडिटर्स से हम सामान ले रहे हैं, बढ़ा के दिखा रहे हैं, वो हमें सिर्फ इन्फ्लेट करके अपने कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, वी आर शोइंग दैट वी आर बाइंग इट एट अ वेरी हायर प्राइस, बट एक्चुअली वी आर बाइंग इट एट अ लोअर प्राइस. सो इन दिस वे वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द मनी, वी मीन्स द पीपल हु आर डूइंग द fraud. I'm not saying about the auditors work here, it is meant the people who is engaged in the fraudulent matter. What they are doing, they are increasing the price of the raw materials or the products they are taking from the suppliers, taking from the red party, but actually they must have bought it in the lower price, okay? So what they are doing, they are doing benefit at the expense of the company. Then channel shuffling, accelerating sales or shipments near the end of our recouping period to artificially boost revenue, ठीक है. क्या करेंगे, accelerating sales को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, विदाउट एनी रीजन. सेल्स अगर बढ़ जाएगा तो कंपनी का दिखाएगा फाइनेंशियल पोजीशन वेरी नाइस, इट इज़ अ वेरी हाई रेवेन्यू, सो द कंपनी इज इन अ वेरी प्रॉफिटेबल पोजीशन, सो पीपल विल इन्वेस्ट देम. अगेन मेनी आउटसाइडर्स will only think या ये पोजीशन इसका अच्छा कंपनी का है. तो दिस इज द वे हाउ दे आर टैकलिंग द थिंग. Okay, round tripping, engaging in circular transactions to create the appearance of legitimate revenue or expenses. Round tripping मतलब एक जगह से खर्चा निकल रहा है दूसरी जगह में निकल, फिर अगेन वो पैसा उधर राउंड होते ही रह रहा है, बट इट इज़ बीइंग टेकिंग प्लेस इनसाइड द कंपनी ओनली, बट अदर पीपल विल थिंक यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे, दैट मीन्स रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंसेस ऑल्सो डन, सो बिजनेस इज गोइंग ऑन विद इन द company. Improper capitalization of expenses, incorrectly capitalizing expenses assets to improve the financial ratios or hide the true expenses. जो खर्चे हमारे हैं रेवेन्यू खर्चे, उसको हम क्या करेंगे, हमको उसको कैपिटलाइज कर देंगे सो दैट वी कैन इंक्रीज द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो हमारा फाइनेंशियल रेशियोज बेटर पोजीशन में पहुंच जाएगा, राइट. अब हाई ट्रू एक्सपेंस, अब जो रेवेन्यू के एक्सपेंसेस हमने कमा दिए हैं तो उसमें क्या होगा, आवर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, राइट. So in this way the fraudulent people will just play a game in order to cheat the people, the stakeholders, right. But the intention is to deceive the company as well as the stakeholders to not to get the actual position of the company, financial health of the company. These methods involve intentional manipulation or misrepresentation of financial information to deceive stakeholders such as investors, creditors. अब creditors को अगर लगे हाँ ये business अच्छा चल रहा है, they making payments, so they will also sell to the company, but actually they are not making payments. So all these things will be just misleading to the creditors also, regulators or to the public. Okay? So this is the way how the fraud is being carried out in the financial statements by the fraudulent people. Fraudulent financial reporting can result in various misstatements in financial statements, including overstated revenue, falsely inflating revenue figures by recording fictitious sales or recognizing revenue prematurely. Revenue मिला ही नहीं है लेकिन हमने उसको ऑलरेडी दिखा दिया. Understated expenses, deliberately understating expenses to artificially inflate profitability. Expenses को बढ़ा दे रहे हैं
प्रॉफिटेबल लुक बढ़ाने के लिए. मिसस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ओवरस्टेटिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स थ्रू इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स को हम बढ़ा के दिखा रहे हैं तो कि हमारा वैल्यू ऑफ द एसेट्स अच्छा रहेगा, तो हमारा बिजनेस का पोजीशन भी हेल्दी दिखेगा. मिसस्टेटमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और ओमिटिंग सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू प्रेजेंट हेल्दियर फाइनेंशियल पोजीशन, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाट मिसस्टेटमेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट्स करने से हम जो ये क्वेश्चन करें, व्हाट मिसस्टेटमेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ हम क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो हमने ओवरस्टेट ऑफ रेवेन्यू किए, हमने अंडरस्टेट ऑफ एक्सपेंसेस, मिसस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, misstatement of liabilities. All these things are helping to what they will do. They will increase the financial position of the company to show that the company is running in a very healthy position. ठीक है. Misrepresentation of financial performance, manipulating financial ratios or key performance indicators to mislead stakeholders about the company's financial health. कंपनी का क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, अगर वो मिसलीड होंगे तो दे विल बी इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी इंस्टेड ऑफ बीइंग नोइंग द एक्चुअल हेल्थ ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी. कंसील्ड लॉसेज, हाइडिंग लॉसेज थ्रू इम्प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस, माने बैलेंस शीट के बाहर में उसको सेट ऑफ कर दे रहे हैं, एक्चुअली जो लॉसेज है उसको दिखाई नहीं रहे हैं. ठीक है. सो दे कैन मिसलीड द स्टेक होल्डर्स. Inaccurate disclosures, providing misleading or incomplete disclosures in financial statements or footnotes to obscure important information. What is the intention of the fraudulent people? Their intention with the employees of the concern, they मिली भगत में काम करे 2-3 जन, there is a collusion of people, employees and their internal control, जहाँ से पकड़ा जाएगा कहाँ पे कुछ fraud हो रहा है, that they also misleading. So what they are doing, they are coming together to make inaccurate disclosures. Inaccurate disclosure जब कर रहे हैं तो उसमें financial statement या footnotes में कुछ information दे रहे हैं जो accurate ही नहीं है, but it is representing a very good position of the company. Then inflated valuation, overvaluing investments, acquisitions or other assets to inflate the company's net worth. कंपनी का जो net worth है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, overvaluing investments का value बढ़ा दे रहे हैं, acquisitions जो खरीदे हैं उनके assets that they are increasing the value of that, or other assets to inflate the company's net worth. Okay. False narratives, providing misleading explanations or narratives in management discussions and analysis, MD&A section, to cover up financial irregularities. If there are financial irregularities in that way case, what they are doing, those fraudulent people, they are providing misleading explanations or narratives in the management discussion. When there is a discussion with the management people, they are giving improper explanations or misleading explanations so that the internal control, they can avoid the internal control as well as the management's observation can also be avoided. ठीक है. फॉल्स नरेशंस दे रहे हैं अबाउट एनी ट्रांजैक्शंस. नॉन कंप्लायंस विद गैप और IFRS, ठीक है, जो वायोलेटिंग जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो करना ही है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS बाय इंटरनेशनली मिसअप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटेंशनली मिसअप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने हैं, एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंट. किसी जैसे कि हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एवरीथिंग हैज़ अ स्पेसिफिक वे ऑफ डूइंग एंड एवरी द इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोवाइडेड wide range of standards to fit in every application, but they are not following them, right? Non-compliance of GAAP or IFRS as well as जो भी standards हैं उनको वो maintain नहीं कर रहे हैं, so that intentional misapplying accounting standards को गलती से apply करके उसको show करने की कोशिश कर रहे हैं कि they are following the accounting standards and misleading the stakeholders. Stakeholders यहाँ पे कंपनी को भी, मैनेजमेंट को भी वो धोखा दे रहे हैं. And in this way, what is the task now? The task increases of the audit work because they have to find out, because internal control वो पकड़ नहीं सक रहा है. तो auditors have to see whether the task is being, how misleading the financial statements are, or whether there are any misstatements in the financial statements, right? Misstatements arising from misappropriation of assets. अभी हमने जो किया था misrepresentation in the financial statements. अभी क्या है? So misstatements arising from misappropriation of assets. Misappropriation of assets can lead to various misstatements in financial statements, including what? Inventory theft,
false recording inventory levels to conceal theft or misappropriation of inventory leading to inaccuracies in the balance sheet and cost of goods sold. ठीक है, COG हम जब निकालते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री थेफ्ट, इन्वेंट्री जो फॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेंट्री लेवल्स को, कंसीलिंग थेफ्ट माने बहुत सारे इन्वेंट्री खरीदा गया है लेकिन उसको मे बी रॉ मटेरियल्स को अंदर ही लाया नहीं गया, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में उसको नहीं लाया गया उसको, या उसको लेवल बढ़ा के लिखा गया होगा. ठीक है, तो कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जाएगा बैलेंस शीट में और हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेशन करेंगे तब भी वो प्रॉब्लम करेगा. ठीक है, सो प्रॉब्लम करेगा मतलब दैट विल इंक्रीज्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा, तो इन दैट वे मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा. लेकिन एक्चुअल सेंस में देखेंगे देयर इज इन्वेंट्री थेफ्ट, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, इन्वेंट्री जो खरीदा ही नहीं किया उसको दिखा दिए, या इन्वेंट्री आया लेकिन दैट नेवर केम इनसाइड द, इट इज जस्ट रिमूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ entry. ठीक है, तो we can see in this way they what they are doing misstatements arising from misappropriation of assets, that is the inventory. Embezzlement of funds, what does it mean? Diverting company funds for personal use or unauthorized purposes resulting in misstatements in cash balances and financial performance. What they are doing, embezzlement of funds, funds जो कंपनी का जो पैसा है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं टू ओन पर्सनल यूज. जो एम्प्लॉयज है who are involved in the fraudulent matter, they are using it for the personal use or unauthorized purposes, right, which is not meant for the company's business, resulting in misstatements in cash balances and financial performance of the companies. भी गलत दिखा रहा है, वो दिखा रहे बहुत बड़ा कि खर्चा जो खर्चा एक्चुअली हुआ ही नहीं है, but they are using it for their own personal purposes and they are showing in the बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन इतने खर्चे हुए हैं. ठीक है, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स, क्रिएटिंग फॉल्स इनवॉइसेस, फिक्टिटियस वेंडर्स और अनऑथराइज्ड पेमेंट्स टू शिफॉन ऑफ फंड्स. तो फिर क्या हो रहा है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फ्रॉम द कंपनी लीडिंग टू ओवरस्टेटेड एक्सपेंस एंड अंडरस्टेटेड कैश बैलेंसेस. वो क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग फॉल्स इनवॉइसेस, फॉल्स जो खरीदे ही नहीं गया वैसे इनवॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, फिक्टिटियस वेंडर्स तैयार कर रहे हैं, वेंडर्स भी प्रेजेंट नहीं है उनके नाम पे फॉल्स इनवॉइसेस तैयार हो रहा है, इवन द वेंडर्स आर नॉट प्रेजेंट है, फिक्टिटियस वेंडर्स आर क्रिएटेड, अनऑथराइज्ड पेमेंट हो रहा है, तो कि क्या हो रहा है, कैश बैलेंस कम जा रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ा दे रहे हैं. तो दैट ऑल दिस थिंग्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के साथ हो रहा है, कंपनी का फंड्स निकल रहा है, बट कंपनी इज नॉट बीइंग अवेयर until unless it is caught by the auditors during audit, because internal control को भी वो पास कर जा रहे हैं by collusion between the employees, right? Fictitious assets, creating fictitious assets or inflating the value of assets on the balance sheet to conceal misappropriation of funds or theft. ठीक है, what they are doing, they are increasing the value of the assets or they creating fictitious assets. ऐसे ऐसे assets खरीदे गए, so इसमें ये top level employees are involved in it. बहुत सारे assets खरीदे गए, the top employees have to sign to it. What happens, they are creating fictitious assets. False invoices made. If the value of the assets, if even the assets is there, they're increasing the value of the assets, inflating the asset value, or they are creating fictitious assets. So the assets actually does not exist on the balance sheet to conceal the misappropriation of funds or theft. जो कंपनी का पैसा वो निकल जा रहा है, they are taking it for their personal use, they don't know, because fictitious assets have been created, nothing can be caught from the view. ठीक है, overstated receivables, falsely inflating accounts receivable balances by recording fictitious sales or overstating the amounts owed by customers to conceal misappropriation of cash receipts, right? अभी कुछ कैश पेमेंट्स हुए हैं जो उन्होंने खरीदा है उसको वो अपने यूज़ में ले रहे हैं, they are taking that money and what they are doing, they are receivables जो मिलने वाला है, that is what we say debtors. ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स वी राइट इन द बैलेंस शीट, वो हमें मिलने वाला है, तो वो इन्फ्लेट कर दे वैल्यू में भी, कहीं से हमें मिलने वाला है 1 लाख, दे इंक्रीजिंग इट टू 2 lakhs, राइट, 1 lakh रुपीज दे विल बी रिमूविंग इट, ओके, एंड सो सेल्स विल बी इंक्रीजिंग or overstating the amounts owed by customers to conceal misappropriation of cash receipts, right? Unauthorized capital expenditure, misappropriating funds by approving and recording unauthorized capital expenditure or fixed assets purchases leading to inaccuracies in the balance sheet and income statement. ठीक है, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या करे, बहुत सारे खर्चे उन्होंने किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, उसको वो दिखा दे रहे कैपिटल फैक्टर में. ठीक है, अनऑथराइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिक्स एसेट परचेजेस, कोई खरीदा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खरीदा हुआ ही नहीं होगा और खरीदा भी हो गया, उस प्राइस को बढ़ा दिया गया है. अनऑथराइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स को ले रहे हैं,
क्या हो रहा है इसमें, बैलेंस शीट में जो एसेट का वैल्यू आ रहा है वो भी गलत आ रहा है, और उसका जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में जो फर्स्ट में हम परचेज कर रहे हैं तो दैट इज कमिंग इन इनकम स्टेटमेंट परचेजेस ऑफ एसेट, दैट ऑल जस्ट व्हाट हैपन्स इन दिस केस, दोनों ही बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट इज जस्ट रॉन्गली स्टेटेड. ओके, सो इन दिस वे क्या होता है, वो अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट चेंज, वैल्यू चेंज कर दे रहे, वैल्यू ऑफ द कंपनी में ओवरस्टेट हो जा रहा है एसेट्स, एज वेल एज it is showing the false financial position of the company to the company itself as well as to the outsiders also, that is the stakeholders. Okay. False expense claim, submitting fraudulent expenses claims or reimbursements of personal expenses resulting in overstated expense, understated net income. Income को कमा के ऐसे दे रहे, वो अपने खर्चे को क्या कर रहे हैं, they are misappropriation the funds of the company for their own personal uses and increasing the expenses, overstating the expenses of the company and understating the net income of the बिजनेस. क्या कर दिया, मेकिंग द ओन पेमेंट्स फ्रॉम द कंपनीज फंड, तो इसमें कंपनी का क्या हो रहा है, नेट इनकम भी कम जा रहा है, राइट. सो वी कैन सी फिक्टिव एसेट्स, ओवरस्टेटेड रिसीवेबल्स, अनऑथराइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन फॉल्स एक्सपेंस क्लेम्स. ऑल दिस वेज, इन दिस वेज द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के थ्रू वो मिस स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं, राइट. Manipulation of petty cash, right? Misappropriating funds from petty cash or manipulating petty cash records or to conceal theft or unauthorized withdrawals. What the people are doing, foreign people, the employees are taking out the money from the business company, and for that they are just petty cash ko they are misappropriating, using for their own personal use, but they are misappropriating the petty cash. Understated liabilities, concealing liabilities or obligations related to misappropriation schemes or to present a misleading picture of the company's financial position. अभी क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द लाइबिलिटीज, कुछ पेमेंट्स करने हैं, ऑब्लिगेशंस करने, वो दिखाई नहीं रहे, उसको चेंज मे बी वो पूरा उसको मिस एप्रोप्रिएट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो एक मिसलीड पिक्चर देना चाहते हैं कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे, ठीक है. फॉल्स जर्नल एंट्रीज, दे आर पासिंग फॉल्स जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग फॉल्स और मिसलीडिंग जर्नल एंट्रीज टू कवर अप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू इनएक्यूरेसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यस, जर्नल एंट्रीज ऐसे पास कर रहे हैं जिसको कभी एग्जिस्ट नहीं किए होंगे, और कोई भी अगर उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किया है उसको हद छुपाने के लिए अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं, और उसमें में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनएक्यूरेट, इज मेड इनएक्यूरेट, ठीक है. तो दीज मिसस्टेटमेंट्स कैन हैव सिग्निफिकेंट implications for the company's financial reporting accuracy, internal controls and overall financial health, and they often require thorough investigation and remedial measures to address, and this work has to be done by the auditor of the organization. So the task of the auditor is quite high related to the misappropriation of the assets done by the employees and just misrepresenting the financial position of the company or financial health of the business. So whose primary responsibility is to prevent and detect fraud? ना अभी हमने देखे फ्रॉड्स कैसे कैसे किए हमने, ठीक है. अभी वो उसको कौन रोकेगा, हु इज डिटेक्ट, उस फ्रॉड को प्रिवेंट करना और उसको डिटेक्ट करना किसका टास्क है. लेट्स सी. द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड लाइज विद द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मैनेजमेंट हैज़ टू बी very much aware, and he has to be see through every step what transactions are being done, how it is done, in order to see whether there is any collusion among the employees and any fraud is creeping in or not. Management is responsible for establishing and maintaining effective internal controls, implementing policies and procedures to mitigate fraud risks. सो फ्रॉड रिस्क रह सकता है, इसलिए मैनेजमेंट क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिबल इस फॉर्म इफेक्टिव कंट्रोल सेट करने हैं, बहुत सारे पॉलिसीज सेट करने हैं और प्रोसीड्यूर्स लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, तो कि देखना पड़ेगा कोई फ्रॉड इनक्रिप्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है. एंड फॉस्टरिंग कल्चर ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एथिक्स मान के चलना, कल्चर ऑफ एथिक्स शुड बी देयर एंड इंटीग्रिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दिस fraud may not crept in. ठीक है. Additionally, the board of directors play a crucial oversight role in ensuring that management implements adequate fraud prevention and detection measures. Board of directors, we can say, who are charged with governance. People, okay, board of directors and the audit committee is a separate part, but board of directors work is also to see whether the management is implementing the procedures which they have taken to prevent the fraud and detection measures also. They are responsible for providing governance and setting the tone at the top
top of the emphasize the importance of ethical conduct and complies with laws and regulations. तो अभी क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स पे पूरा ये आ रहा है कि उनका टास्क है नॉट ओनली टू सी वेदर द मैनेजमेंट इज इंप्लीमेंटिंग द एडिक्वेट फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन मेजर्स और नॉट, देयर ऑल्सो टू सी कि गवर्नेंस के साथ साथ वो ऐसे टॉक में वो देखते हैं कि एथिकल कंडक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं, एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस आर बीइंग कैरिड आउट और नॉट, राइट. So other key stakeholders such as internal auditors, external auditors, compliance officers and employees also play important roles in preventing and detecting fraud. Yes. So not only we can say that the board of directors and management are responsible, other key stakeholders, बाकी stakeholders है means the persons who are interested such as internal auditors. हर कंपनी का अपना internal auditors होगा, उनको चेक करना है कि कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ what transactions are being taken, how they are taken, उनका क्या invoices है, but the whole procedure they have to see, not only take the steps prevention and detection, they also have to see कि कौन कौन से steps हो रहे हैं. तो there should be constant they have to keep a constant eye on the every employee as well as not only employee, how the procedures are being taken out. ठीक है. सो एक्सटर्नल ऑडिटर्स whose task, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जिनको देखना है कि कैसे ये काम हो रहा है, ओके. कंप्लायंस ऑफिसर्स who have to comply with a lot of rules and regulations. Employees task is also to see कि whether any fraud is creeping in or not. Internal auditors provide independent and objective assurance and consulting services aimed at evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance process. जो internal auditors कंपनी के रहते हैं उनका काम क्या है, independent वो रहेंगे, they should not be biased, they should have an independent view, they should be kept independent so that they can give their view and assurance that all thing is being done without any fraud is creeping in, and effective risk management control services they are not, and governance process also. External auditor review the organization's financial position and internal controls to provide an independent opinion on their fairness and reliability, which includes assessing the risk of fraud. ठीक है. अब जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है उनका भी टास्क है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ और इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये फाइनेंशियल पोजीशन के बारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे ऑर्गेनाइजेशन से वो रिव्यू देगा, एंड दैट रिव्यू विल बी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ ट्रू एंड फेयरनेस, वो कितना रिलायबल है, कितना रेलिवेंट है. ठीक है. एंड विच इंक्लूड्स असेसिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड है कि नहीं, कितना लेवल तक फ्रॉड हो सकता है. ऑल दिस इज टास्क ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर. अल्टीमेटली प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड रिक्वायर्स अ कोलैबोरेटिव effort among all stakeholders, with management taking the lead in establishing a robust control environment and fostering a culture of honesty and integrity throughout the organization. तो हम देख रहे हैं सब ये जो प्रिवेंट करना फ्रॉड को, ये डिटेक्ट करना, इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए सब स्टेक होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स, जैसे इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, बट द मेन रोल leading will be taken by the management to see that whether everything is taken in a very well in a form way, and there should be a culture of honesty and integrity throughout the organization. ठीक है. What are fraud risk factors? ठीक है. अभी हमने कहा कौन कौन अभी रिस्पॉन्सिबल है. अभी हम देखें what are the fraud risk factors. Fraud risk factors are circumstances or conditions that may increase the susceptibility of an organization to fraudulent activities. तो fraud risk factors क्या है वो हमें बताएंगे. वो circumstances हैं and conditions arise कर रहे हैं जो हमारे suspect को ये कर रहा है कि ये यहाँ पे fraudulent activities हुए हैं. So let's see what are the fraud risk factors. These risk factors can vary depending on the nature of the business, industry, and specific organizational characteristics. Some common risk factors include management override of controls. Management's ability to override controls and exercise undue influence over financial reporting increases the risk of fraudulent financial reporting. ठीक है. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, मैनेजमेंट का जो एबिलिटी है, जो कंट्रोल है इंटरनल, उसको ओवरराइड करने का, एंड एक्साइज इन अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अभी मैनेजमेंट अगर जो इंटरनल कंट्रोल सेट है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको मैनेजमेंट उसको ओवरराइड कर सकता है. So in that case we can see they can exercise undue influence over the financial reporting. जो financial reporting वो कंपनी को बढ़ा के दिखा सकते, कमा के दिखा सकते, so as to portray that the company is very well positioned, मैंने it's in a very healthy position, financial position. तो financial reporting को वो fraudulent बना सकते हैं. ठीक है. So there arises the risk of fraudulent financial reporting. Then inadequate oversight by the board.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जिनका काम है गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी एवरीथिंग मेंटेन कर, उनका अगर इनएडिक्वेट ओवरसाइट है, दे डोंट हैव एनी फ्यूचर साइट कि ऐसा हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो रीजन ऑफ fraudulent activities. So see, weak governance structures and ineffective oversight by the board of directors can create an environment conducive to fraud. Yes, अगर वो जो board of directors है जिनका काम है governance करना, उनका अगर weak position है and they don't know how to take the steps in order to, we can say ineffective oversight by the board of directors can create an environment जहाँ पे fraud होने का chances बढ़ जा रहा है. ठीक है. हाई टर्नओवर और डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज़, मतलब अगर एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जा रहे एंट्री वे फिर निकल गए, दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्क. सो इसमें क्या है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैप्पी, तो उसमें क्या है, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं. ठीक है. लेट्स सी व्हाट दे सेइंग. हाई टर्नओवर और डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स हाई टर्नओवर रेट्स और डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज सच एज थेफ्ट, एम्बेजलमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. मैंने बार बार एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं नौकरी, फिर आ रहे हैं, तो दिस इज द problem and employees are not happy with the concern. In that case, the chances of theft, embezzlement of funds, company के funds को misappropriate करना, manipulation of financial records are increasing, right? Financial pressure, financial difficulties, pressure to meet earnings targets or personal financial obligations may incentivize individuals to engage in fraudulent activities to improve financial performance or alleviate personal financial strain. अच्छा, कोई भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है जिसका अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उसके पास कोई प्रेशर है, या हो सकता है कि जो कंसर्न है उसका बहुत प्रेशर है, यू हैव टू डू दिस, तो इन दैट केस what will the employees do in order to make the position of the company good? They will misappropriate the assets, misappropriate the information, financial information. ठीक है. तो earnings target को meet करने के लिए वो falsification कर सकते हैं, और साथ में अपना भी अगर उनका financial strain है तो उसको भी हटाने के लिए कोई उन्होंने लोन लिया जिसको पेमेंट करने, तो तब they will go to the fraudulent measures, right? लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इज अ मस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अभी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ अगर नहीं हर स्टेप पे, जहाँ पे विच इज़ इन्वॉल्विंग कैश और विच इज़ कस्टडी मैटर्स, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें ये होना है, वी हैव टू बी वेरी मच हैविंग कंट्रोल इन दोज एरियाज. इफ द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज नॉट डन, देन देयर विल बी फ्यू पीपल इन्वॉल्व इन दैट पार्ट एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ अ लॉट ऑफ थेफ्ट और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में क्रिप्टेड. ठीक है. लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज विद इन की फाइनेंशियल पोजिशन सच एज ऑथोराइजेशन, कस्टडी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू परपेट्रेट एंड कंसील फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. अगर देयर आर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज फॉर each work and even turnover माने employees are being also, task is also changed. ठीक है. इन दैट केस क्या रिस्क हो जाएगा, कम जाएगा. लेकिन अगर एक सेम एम्प्लॉय इज बिंग गिवन टू राइट द ट्रांजैक्शंस, द पर्सन इज मेंटेनिंग द कीज ऑफ द कैश and also custody, everything is under the control of 2-3 people, then there is a chance that there may be fraudulent activities and that they can be concealed by them. ठीक है. So these are the things we can see how the fraud risk factors are creeping in. Then complex or unusual transactions, complex or unusual transactions such as related party transactions, off balance sheet arrangements or non-routine transactions. ठीक है. They may be used to conceal fraudulent activities or manipulate financial results. Complex or unusual transactions, कुछ complex unusual जो हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ transactions such as related party transactions. related party मतलब अंदर ही अंदर में उन्होंने transactions किए हैं, दाम बढ़ा के sales का दिखा दिए हैं. off balance sheet arrangements, balance sheet के बाहर में arrangements हो जा रहे हैं, सेटअप हो जा रहा है. और नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस कोई रूटीन सेट नहीं, उसमें ऐसे, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, एज वेल एज फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बढ़ा के दिखा सकते हैं, कंसीलमेंट ऑफ एक्टिविटीज भी किया जा सकता है. Ineffective internal controls, weakness in internal controls such as ineffective monitoring, inadequate review procedures or lack of enforcement of policies and procedures can increase the risk of fraud by providing opportunities for misconduct to go undetected. अभी जो इंटरनल कंट्रोल है कंपनी का, वो अगर इनफेक्टिव है, उसमें वीकनेस है, तो लोग पे अगर मॉनिटरिंग ठीक से किया नहीं जा रहा है, रिव्यू प्रोसीजर्स ठीक से लिया नहीं जा रहा है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सेट किया गया है, कंट्रोल सेट करने, उनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ रहा है. क्योंकि जो मिसकंडक्ट करेंगे, जो लोग फ्रॉडुलेंट है, उनको पता है कि यहाँ पे ये सब पॉलिसीज फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड, सो दे गो ऑन टेक द अपॉर्चुनिटी टू डू द मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन, राइट.
to undetected go undetected, and fraudulent means crept in. Inadequate employee training and awareness. Insufficient training and awareness programs related to fraud prevention and detection may result in employees being unaware of their responsibilities or the warning signs of fraudulent activities. Yes, अगर employees को जो organizations है उनको employees लोग को adequate training नहीं दिया जा रहा, उनको aware नहीं किया जा रहा है कि कैसे वो डिटेक्ट करेंगे कोई fraud crept in हुआ है कि नहीं, detection हो सकता है कि नहीं, and they will not be aware of the responsibilities कि देखना हाँ चलो यहाँ पे कुछ हुआ है कि we are not aware of that कि ऐसे responsible हमारा भी बनता है कि we should see any misconduct is being done or not. So adequate training and awareness of the employee should be increased by training programs so that they will be responsible for, and if any warning sign is seen to them, they can just make the management aware of it. Inadequate whistleblower mechanisms. Lack of effective channels for reporting concerns or suspicions of fraud may deter employees from coming forward with information about potential fraudulent activities. अच्छा, अभी whistleblower mechanism यहाँ पे बहुत सारे organizations हैं जहाँ पे उनको aware किया जा रहा है, but there is no one, कोई एक report करने का कोई एक जगह नहीं है, कोई एक channel नहीं है जहाँ पे वो report कर सकते हैं कि ऐसे suspicion हमें लगा है कुछ एक fraud हो रहा है. If even they get the knowledge, if you are becoming aware of it, but they are not getting the mechanism how to come up with the information to the others, to the management or to the board of directors. So inadequate whistleblower mechanism. Second, external pressures or influences. External factors such as competitive pressures, industry norms or societal expectations may create incentives or rationalizations for engaging in fraudulent activities. Yes, external pressure रहता है कि चलो अभी 2-3 कंपनी का competition है, अभी सबको अपना ahead रखना, तो वो क्या करेंगे, they will just misappropriate their assets or mislead their financial statements in order to show that they are in a very better position. So ये क्या करते हैं, they may create incentives or rationalize, incentives दे रहे दिखा रहे, but एक्चुअली इंडस्ट्री नॉर्म्स भी है, बहुत सारा सोसाइटी का भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे लेकिन परफॉर्म नहीं कर सक रहा है, तो दीज आर क्रिएटिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑन द कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशंस टू मिस अप्रोप्रिएट देयर पोजीशन ऑल्सो. Identifying and assessing this fraud risk factors can help organizations develop targeted fraud prevention and detection of measures to mitigate the risk of fraud and protect against potential losses. Yes, ये जो जितने सारे fraud risk factors इनको identify करना, उनको assess करना, right, and then help the organizations, जो organizations है, develop targeted fraud prevention and detection measures. Targeted fraud हो सकता है, उसके लिए एक prevention method रखना पड़ेगा, उसको detect करना पड़ेगा, so that the risk will be mitigated and protect against potential losses. Losses ना हो, उससे protection मिल सकता है. Why evaluation of fraud risk factors by auditor is necessary. ठीक है, अभी हमने कहा fraud risk factors के, अभी इसको evaluation करना, right? Why evaluation of fraud risk factors by auditor is necessary. Necessary क्यों है? ठीक है, तो हम देखते हैं what are the points. Evaluation of fraud risk factors by auditors is necessary for several reasons. What are the reasons? Risk assessment. Assessing fraud risk factors help auditors understand the potential vulnerabilities within an organization's control environment, enabling them to focus audit procedures on areas with a higher risk of fraud. Risk assessment करना पड़ेगा. First step है क्यों? Assessing risk fraud risk factors, जहाँ जहाँ हो सकता है ऑडिटर को अंडरस्टैंड कर पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोई वल्नरेबिलिटी रह सकता है नहीं सकता है, उस जगह को ढूंढ के निकालना है. रिस्क कहाँ पे है और उसी जगह को फोकस करना है ऑडिट में, तो टू फाइंड आउट कि जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड इज देयर, उस एरियाज को निकालना है ऑडिटर को, निकाल के वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, वेदर दे आर बैक्ड अप इन सच अ वे सो दैट नो fraud can be detected, or if there is a risk कि यहाँ पे higher risk हो सकता है, उस जगह को assess करना पड़ेगा किसको, ऑडिटर को. ठीक है. Tailored audit approach. By identifying and evaluating specific fraud risk factors, auditor can develop an audit plan and procedure that are tailored to address the unique fraud risks facing the organization, ensuring that audit resources are efficiently allocated. Yes, first में वो risk को assess करेंगे कि कहाँ पे risk factors ज़्यादा हैं, देखेंगे vulnerability कहाँ है control system में, कहाँ पे loopholes है control system में जहाँ से fraud हो सकते हैं, तो वो जगह को पहले वो detect करेंगे, risk assess करेंगे. Second क्या करेंगे, अपने approach को, प्रोसीड्यूर को ऐसे प्लान करेंगे, प्रोसीड्यूर को ऐसे टेलर मेक करेंगे सो दैट वो ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को वो ऑर्गेनाइजेशन जो फेस करे उसको वो स्ट्रीमलाइन कर सके एंड उसको ठीक से अपने जो रिसोर्सेज है ऑडिटर के पास उसको यूज़ करके उसको एफिशिएंटली
यूज कर सकेंगे so that the fraud risk factors can be detected by the auditor. Then detection of fraudulent activities. Evaluating fraud risk factors increases the likelihood of detecting fraudulent activities such as misstatements in financial statements, misappropriation of assets or fraudulent financial reporting. अब fraudulent financial reporting हो रहा है, misappropriation of assets हो रहा है, misstatements and financial statements हो रहा है, ये सब चीज़ को ढूंढ के निकालना भी टास्क ऑफ ऑडिटर. ठीक है. सो हम देख रहे पहले रिस्क एसेस कर रहे हैं, फिर टेलर्ड ऑडिट अप्रोच लगा रहा है, फिर डिटेक्शन कर रहा है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को. ठीक है. तो दीज आर द नेसेसरी रीजंस बाय द ऑडिटर कि इवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है. कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. Auditing standards such as those issued by the Internal Auditing and Assurance Standards Board IAASB or the Public Company Accounting Oversight Board PCAOB require auditors to consider the risk of material misstatement due to fraud when planning and performing an audit. Yes, तो compliance with auditing standards उन्हें करने हैं auditors को. फिर क्या है, enhanced professional skepticism. Why? The evaluation of fraud risk factors enhances auditors' professional skepticism, prompting them to critically assess management's representations, corroborate evidence, ठीक है, corroborate evidence and remain alert to the possibility of fraud throughout the audit process. Yes, उनका जो professional skepticism है, उनको क्या होता है, they are given by their education, by their way of professional work performance expertise. What they do, they can evaluate the fraud risk factors and enhance auditors professional skepticism. तो उनको क्या होता है, they can critically assess जहाँ पे मैनेजमेंट मिसप्रेजेंटेशन कर रहा है, जहाँ पे एविडेंस को छुपाया जा रहा है, corroborate evidences and remain alert, always alert रहेंगे कि कहाँ पे कुछ एक ऑडिट प्रोसेस में फ्रॉड है, इस ऑडिट प्रोसेस के थ्रू ढूंढ के निकालना है. तो दे आर गेटिंग दैट थ्रू द एनहेंस प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. ठीक है. लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ऑडिटर्स मे बी सब्जेक्ट टू लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस टू एसेस एंड कम्युनिकेट फ्रॉड रिस्क्स टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज. तो वी कैन सी दीज आर द रीजंस व्हाई द ऑडिटर्स वर्क इज टू सी हाउ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर इवैल्यूएटेड. ठीक है. मेंटेनिंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस. Demonstrating a thorough evaluation of fraud risk factors helps auditor maintain the independence and objectivity as it demonstrates their commitment to providing unbiased and reliable audit opinions. अभी auditor का काम क्या है, जो opinion देंगे that will be true and fair, that will be free from bias, so they will be left independent to audit to give their view on the फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स विदाउट एनी बायस और ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. तो अभी क्या है, दिस मेंटेनिंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एनहेंस स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस. अगर इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर ऑफ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इज नेसेसरी बिकॉज इट इंक्रीजेज द स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनीज financial reports, right? By conducting a comprehensive assessment of fraud risk factors, auditors can provide stakeholders with greater assurance regarding the integrity and reliability of financial reporting processes, enhancing confidence in the organization's financial statement. अभी organization जो financial statement है उसके बारे में confidence grow कर दे रहा है कौन, because it has been audited. So we know the auditor's professional skepticism, his knowledge, his expertise has been involved in the performance of the audit work, and so this increases the confidence of the stakeholders who are going to believe in the integrity and reliability of financial reporting. ठीक है. ओवरऑल द इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, एनेबलिंग ऑडिटर्स टू आइडेंटिफाई, assess and respond to the risk of fraud effectively while fulfilling the professional responsibilities and obligations. तो we can say overall ये जो evaluation of fraud risk जो auditors कर रहे हैं audit process में है, वो क्या कर रहे हैं, help the auditors to identify the risk, assess the risk, how much risk is, and respond to the risk of fraud effectively. अपना काम करते हुए वो इसको कर रहे हैं. तो दे आर एसेसिंग, दे आर आइडेंटिफाइंग, दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क फ्रॉड इफेक्टिवली, एंड दिस इज एनहेंसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स एज वेल एज इट इज एनहेंसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन टेकिंग डिसीजन about investing, decision about increasing the sale. We can see in fact the auditors are giving confidence to the stakeholders about the financial reporting of the company. Thanks.